Welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, part Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Microwave Engineering. Dear students, in the last lecture, we have discussed about one of the important parameter of the transmission line, which is nothing but characteristic impedance. So characteristic impedance is one of the important parameter that decides energy flow or power flow on the transmission line. Okay, and what is Z0? Z0 is that is nothing but it is the ratio of voltage or current at any point on the transmission line. So if we take the ratio of voltage and current, V plus, that is a forward voltage, okay, voltage or forward voltage traveling wave, and I plus, that is a forward current traveling wave. So if we take the ratio of voltage and current at any location on transmission line, we will get the characteristic impedance Z0. So characteristic impedance is nothing but it is the Z0 is equal to square root of R plus J omega L divided by G plus J omega C, and which is nothing but it is ratio of V plus divided by I plus. Okay, so this thing we have discussed in the last class. We also discussed that this characteristic impedance is the performance parameter of the transmission line, means it depends on the parameters of the transmission line. Which are the parameters? Resistor, inductor, conductance and capacitance. Okay, so if we know this primary constant of the transmission line, we can easily compute this Z0, that is a characteristic impedance. And sometimes this Z0 is already given in the data sheet of the transmission line. तो मतलब जब भी हम transmission line की जो data sheet होती है उसमें Z0 की value होती है. So once we have the value of Z0, we do not have to depend on this value of R, L, G and C in order to compute Z0. So similarly, V minus divided by I minus is nothing but it is the minus Z0. What is V minus? That is the voltage, that is a backward traveling wave, backward voltage traveling wave. What is I minus? Backward current traveling wave. So at any point of time, if we take the ratio of V minus and I minus on the transmission line, we will get the negative of the characteristic impedance, that is Z0. Okay, and we also discussed that this negative indicates the negative resistance. Basically the real part of the Z0, that is the resistance. So that indicates the negative resistance. So negative resistance tells us that energy is not supplied but energy is received on the transmission line. Okay, इसका मतलब क्या होता है कि बैकवर्ड ट्रैवलिंग सप्लाई एनर्जी टू दी जनरेटर एंड. मतलब यहाँ पे ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये जनरेटर एंड है. ओके, तो जो बैकवर्ड वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, दैट सप्लाइज एनर्जी. दैट एनर्जी किसको सप्लाई करता है? दैट सप्लाई एनर्जी टू द जनरेटर एंड, टू द जनरेटर एंड. दिस थिंग वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास. Okay, now today we will discuss about the origin on the transmission line. Okay, हम origin on the transmission line define करेंगे. Now it's time to define the origin on the transmission line. So consider this transmission line. You can see this is the generator end. At this point there is a generator. Okay, this is a generator end that generates the microwave energy. This is the generator end, and this is the load end. This is the load impedance or load end. This is also known as load end. This is also known as a load end. Okay, so this is the generator end on the transmission line and this is the load end on the transmission line. Now if we measure the distance from this load end towards the generator, अब तक हमने क्या किया था कि जो भी वोल्टेज और करंट डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, दैट इज वी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ एक्स, डिस्टेंस एक्स, दैट इज इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्स डिस्टेंस. सो यू कैन सी, सपोज इफ यू look at this expression of voltage and current, you can see we have considered the distance, that is the positive x direction. We have considered the distance in terms of positive
x direction. So you can see this is a positive x direction, that is from generator to load in this direction. Now what we will do, we will define the distance that is from load end to generator end. Matlab this end is considered as a L is equal to 0. Okay, so all the distance are measured from load end now. Okay, so we are, instead of considering the distance in positive x direction, we'll consider the distance from load to generator, that is in this direction, and we define that distance as a L. Now what is L over here? L is nothing but it is the minus x. What is the relation between L and x? That is L is equal to minus x. पहले हम डिस्टेंस जो भी कंसिडर करते थे और वोल्टेज और करंट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट करते थे वो हम कैसे करते थे? विद कंसिडरिंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x. Okay, in this direction from generator to load. Now what we are doing, we are defining the origin at the load end, that origin at the load end on the transmission line, and we will consider or we will measure the distance from L is equal to 0 to towards the generator. Okay, so from left to right, sorry, right to left, not from left to right. Okay, at L is equal to nothing but it is a minus x. Okay, so if the distance measured from load towards generator as L is equal to 0 from load end and L is equal to minus x, but obvious x and L are in the opposite direction. Okay, now if we put x is equal to minus L in voltage and current expression, what we will get, यहाँ पे जो voltage and current का expression है उसमें x की जगह पे minus L लिखो, तो x की जगह पे माइनस L लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू v प्लस ई रेस टू गामा L प्लस v माइनस ई रेस टू माइनस गामा L. सिमिलरली I इज इक्वल टू v प्लस डिवाइडेड बाय z नॉट ई रेस टू गामा L माइनस v माइनस डिवाइडेड बाय z नॉट ई रेस टू माइनस गामा L. So similarly, if we replace x by minus L, then our voltage and current expression on transmission line becomes v is equal to v plus e raised to gamma L plus v minus e raised to minus gamma L. I is equal to v plus divided by z naught e raised to gamma L minus v minus divided by z naught e raised to gamma L. Okay, so if we consider the origin on the transmission line as load end, okay, load end से अगर मैं origin consider करूँ, then voltage and current is defined by these relations. Okay, where L is equal to 0 correspond to location of the load. Okay, मतलब जो distance का जो reference है we are taking with respect to L. L is equal to 0, that defines the location of the load. This defines the location of the load. Okay, समझ में आ गया? Okay, so L is equal to 0 correspond to location of load or other end of the transmission line. This is also known as the other end of the transmission line, and generator end is basically known as a transmission end of the transmission line. ये लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. ट्रांसमिशन एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. ट्रांसमिशन line. So basically this is generator end is basically known as a transmission end of the transmission line, and this is known as a receiving end of the transmission line. Okay, load end is known as a receiving end of the transmission line. Now if we apply the boundary condition, now if we apply the boundary condition मतलब L is equal to 0. So at L is equal to 0 अगर मैं boundary condition apply करूँ and terminate the light into impedance that is ZL, ये लाइन को मैं लोड इम्पीडेंस ZL कंसीडर करूँ, ये जो लोड इम्पीडेंस टर्मिनेट किया उसको मैं ZL कंसीडर करूँ, and if we apply the boundary condition that is at L is equal to 0, what is impedance? That is impedance is equal to ZL. So if we apply the boundary condition that is at L is equal to 0, the impedance is ZL. Then what is ZL? ZL is nothing but it is the impedance. What is impedance? Impedance is the ratio of voltage and current. Impedance क्या होता है? हमें पता है, हमारे नॉर्मल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें पता है कि impedance is equal to voltage divided by current. बट यहाँ पे मुझे क्या करना है? बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी. बाउंड्री कंडीशन कौन सी है? एट L is equal to 0, Z is equal to ZL. At L is equal to 0, Z is equal to ZL. So condition is that at L is equal to 0, the impedance is nothing but it is the ZL, and which is nothing but ratio of voltage and current. So यहाँ पे देखो ये हमारा वोल्टेज का जो रेशियो, वोल्टेज का जो फॉर्मूला है उसमें L is equal to 0 रखो, बाउंड्री कंडीशन. तो V क्या मिलेगा मुझे? V क्या मिलेगा? V प्लस, ओके, प्लस V माइनस, बिकॉज L is equal to 0.
देन एल इज इक्वल टू जीरो करें, ई रेस टू जीरो इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी एल इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ई रेस टू जीरो इज इक्वल टू 1। सिमिलरली करंट इज इक्वल टू, करंट क्या हो जाएगा बेटा, V प्लस डिवाइडेड बाय जेड नॉट माइनस V माइनस डिवाइडेड बाय जेड नॉट, बिकॉज वी हैव अप्लाइड द बाउंड्री कंडीशन दैट इज एल इज इक्वल टू जीरो। तो एल इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये टर्म 1 हो जाएगा, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो पूरा 1 हो जाएगा। ओके, तो वी आर आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन वी आर गेटिंग वोल्टेज एंड करंट एट एल इज इक्वल टू जीरो, दैट शुड बी V is equal to V plus plus V minus, I is equal to V plus divided by Z naught minus V minus divided by Z naught। अब ये दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें ZL मिल जाएगा, तो हम ये दोनों का रेशियो ले V plus plus V minus divided by V plus minus V minus, ओके, इंटू Z naught, ये जो है वो कॉमन निकल जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ZL is equal to V plus plus V minus divided by V plus minus V minus into Z naught. Let me write it again so it will be more clearer to you. So ZL is nothing but ZL is equal to V plus plus V minus divided by V plus minus V minus, okay, into Z naught, into Z naught, and this is nothing but it is the ZL. This is formula of ZL. So ZL is equal to, in the bracket, V plus plus V minus divided by V plus minus V minus. Okay, and very important, you can see from this expression, load impedance is related to the characteristic impedance Z naught. Very important. जो load impedance है that is related to the characteristic impedance Z naught, and it is also related to the amplitude of forward and backward wave, backward voltage traveling wave. तो V plus क्या है, what is V plus, amplitude of the forward voltage traveling wave. What is V minus, there is the amplitude of the backward voltage traveling wave. Okay, so our load impedance, okay, with which we have terminated the line, okay, with which we have terminated the line, and after applying boundary condition L is equal to 0, the load impedance is related to the characteristic impedance Z naught, and it is also related to the amplitude of the forward voltage and backward or reverse voltage traveling wave. Okay, one can also make note that if we take the V minus V plus common, यहाँ से V plus अगर मैं common ले लूँ then what we will get, अगर मैं V plus common ले लूँ यहाँ से then what we will get, let's take V plus common, तो ZL is equal to क्या हो जाएगा, take V plus common from this, so V plus को common ले लूँ तो V plus outside 1 plus V minus, okay, divided by V plus divided by V plus, यहाँ से भी कॉमन ले लो, ओके, तो क्या बचेगा 1 माइनस V माइनस डिवाइडेड बाय V प्लस, ओके, इंटू Z नॉट, और V प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, इफ वी टेक द V प्लस कॉमन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन व्हाट वी विल गेट, दैट इज ZL इज इक्वल टू 1 प्लस V माइनस डिवाइडेड बाय V प्लस ओवर V माइनस 1 माइनस V माइनस डिवाइडेड बाय V प्लस इंटू Z नॉट, ओके, and this ratio of V minus and V plus, that is nothing but it is a very meaningful quantity in terms of transmission line. तो ये V minus V plus है, that is a ratio, this ratio is the meaningful quantity, okay, and this parameter V minus divided by V plus is basically known as a reflection coefficient, which is the new parameter of the transmission line, very important. ओके, सो यहाँ पे जो रेशियो एक्सप्रेशन में V माइनस डिवाइडेड बाय V प्लस, दैट इज बेसिकली नोन एज अ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, इट इज अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। सो रेशियो ऑफ V माइनस डिवाइडेड बाय V प्लस इज बेसिकली नोन एज अ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ओके, यस और नो। सो न्यू पैरामीटर विच इज द मेजर ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वेव इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट. Okay, and what is reflection coefficient? Reflection coefficient is denoted by gamma L. It is denoted by gamma L, which is a function of length. Okay, and it is the ratio of backward wave to forward wave. It is a backward wave, this is a forward wave. तो backward wave कौन सा है बेटा? V minus e raised to minus gamma L. This is a backward wave. Okay, and this is the forward wave, that is V plus e raised to gamma L. Okay,
यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो सिर्फ मैंने v माइनस लिया और यहाँ पे v प्लस लिया और यहाँ पे v माइनस इंटू ई रेस टू गामा माइनस गामा लिया और यहाँ पे v प्लस ई रेस टू गामा लिया। तो यहाँ पे हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की है और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में मैंने बाउंड्री कंडीशन l इज इक्वल टू 0 अप्लाई नहीं की है। सो दिस इज अ बैकवर्ड वेव बेसिकली, दिस इज अ बैकवर्ड वेव, ये मेरा बैकवर्ड वेव है, बैकवर्ड वेव, दिस इज द फॉरवर्ड वेव, is a forward wave. So gamma L is equal to V minus e raised to minus gamma L divided by V plus e raised to gamma L. And this ratio of the backward wave and forward wave on the transmission line is basically known as a reflection coefficient, which is the new parameter. Okay, and what this reflection coefficient defines? Reflection coefficient is the measure of how much energy is reflected from the load end of the transmission line. मतलब जब भी एनर्जी, ये ट्रांसमिशन लाइन है सपोज, ओके, ये जनरेटर एंड है, दिस इज जनरेटर एंड, ओके, दिस इज द लोड एंड, दिस इज द लोड एंड, एंड वेन एवर द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेटर एंड टू लोड एंड, देन सम एनर्जी मे बी रिफ्लेक्टेड बैक, कुछ एनर्जी लोड एंड से वापिस जाएगी। तो उसका जो हाउ मच एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक, इसका जो मेजरमेंट है वो कौन देता है? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, that given by the reflection coefficient, because reflection coefficient is the ratio of backward wave to the forward wave. मतलब इस डायरेक्शन में जो वेव होता है वो फॉरवर्ड वेव होता है, इस डायरेक्शन में जो वेव होता है वो बैकवर्ड वेव होता है। तो आप देख सकते हो कि बैकवर्ड वेव मतलब इट इज द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस लोड एंड, ओके, मतलब ये डायरेक्शन में जो भी वेव ट्रैवल करेगा, दिस बैकवर्ड वेव, दैट इज अ रिफ्लेक्टेड वेव, ओके, एंड दिस इज द इंसिडेंट और फॉरवर्ड वेव। मतलब वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं है तो टाउ एल इज इक्वल टू 0। अगर रिफ्लेक्शन नहीं है, सिर्फ फॉरवर्ड वेव है, तो ये टर्म जो है ये v माइनस बैकवर्ड वेव 0 हो जाएगा, बिकॉज अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो टाउ एल क्या हो जाएगा हमारा? 0। सो बेसिकली रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज द मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द लोड एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ओके, एंड इफ यू अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन, मतलब एट एल इज इक्वल टू 0, व्हाट शुड बी द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट? दैट इज टाउ 0 इज इक्वल टू v माइनस डिवाइडेड बाय v प्लस, एल इज इक्वल टू 0 रख दो, तो v माइनस डिवाइडेड बाय v प्लस, सो टाउ 0 इज इक्वल टू v माइनस डिवाइडेड बाय v प्लस, ओके, विच इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट l इज इक्वल टू 0, एट l इज इक्वल टू 0, मतलब एट दिस पॉइंट व्हाट इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट? l इज इक्वल टू 0, दैट इज v माइनस डिवाइडेड बाय v प्लस, and at any length L, at any point on the transmission, it is nothing but tau L is equal to V minus e raised to minus gamma L divided by V plus e raised to gamma L. And basically, it is a ratio of backward wave to forward wave, and it is the new parameter, very important parameter of the transmission line, that is the reflection coefficient. Okay, समझ में आ गया? Okay. Now, if you put this tau 0 is equal to V minus divided by V plus, okay, इन दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मिला है उसके v माइनस डिवाइड बाई v प्लस की जगह पे मैं टाउ 0 रखूं तो मुझे एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा? रिप्लेस द v माइनस डिवाइड बाई v प्लस इन दिस जेड एल एक्सप्रेशन विथ टाउ 0, गामा टाउ 0, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? जेड एल इज इक्वल टू जेड नॉट, ये तो है ही, ओके, यहाँ पे क्या करना है? v माइनस डिवाइड बाई v प्लस की जगह पे हमें गामा 0 रखना है, गामा 0, तो ये हो जाएगा गामा 0 1 प्लस गामा 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा 0, 1 माइनस गामा 0. So this is the load impedance ZL, characteristic impedance Z0 and reflection coefficient का relation. Okay, so this is the relation between load impedance ZL, Z0 and gamma 0, that is the reflection coefficient. अगर मैं ये रिलेशन को इन्वर्ट करूं, इफ आई इन्वर्ट दिस रिलेशन, अगर मैं ये रिलेशन को इन्वर्ट करूं, देन व्हाट आई विल गेट? दैट इज इफ यू इन्वर्ट दिस रिलेशन, ये रिलेशन को इन्वर्ट करें, मतलब हमें गामा एल को मैं सब्जेक्ट बनाऊं, तो ये क्या बन जाएगा? गामा एल इज इक्वल टू गामा 0 इज इक्वल टू जेड एल माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड नॉट इज इक्वल टू वी माइनस डिवाइड बाई वी प्लस। अगर मैं इस इन्वर्ट रिलेशन को इन्वर्ट करूं और थोड़ा उसको रीअरेंज करूं, देन व्हाट आई विल गेट? I will get there is a gamma 0 is equal to ZL minus Z0 divided by ZL plus Z0, and which is nothing but it is a ratio of backward wave to forward wave. So you can see this reflection coefficient, our reflection coefficient parameter, which is the measure of the reflection
on the transmission line, how much energy is reflected back, is related to the line impedance, that is ZL, and characteristic impedance, that is Z naught. That is Z naught. In very special case, if we take ZL is equal to Z naught, if we consider ZL is equal to Z naught, okay, then मतलब क्या हुआ, if load impedance, the impedance with which we terminated the line, ये लाइन को जो हम impedance से terminate करते हैं वो अगर characteristic impedance के बराबर है, okay, then what will happen, this reflection coefficient will become 0. Okay, मतलब special case, this condition is if we terminate the line with the impedance is equal to characteristic impedance, then reflection coefficient is 0. उसका मतलब क्या होता है कि there is a no reflection on the line, there is a no reflection on the transmission line, backward wave मिलेगा ही नहीं, हमें रिफ्लेक्शन एनर्जी मिलेगी नहीं. जितनी एनर्जी जनरेटर ने ट्रांसमिट की है, जनरेटर, ये जनरेटर एंड है, जितनी उसने ट्रांसमिट की है टूवर्ड्स द लोड, देयर इज अ नो रिफ्लेक्शन. ऑल द एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेटर टू लोड, all the energy is transferred to the load successfully. There is a no reflection. ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा लोड एंड से, बिकॉज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज 0, मतलब बैकवर्ड वेव है ही नहीं. ZL इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज 0. So this is a very important condition. If you would like to have 0 reflection on the transmission line, हमें अगर रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, डिस्टर्बेंस बैक नहीं चाहिए वापिस, then we must have to terminate the line is equal to characteristic impedance. जो भी हम लोड इंपीडेंस से यहाँ पे टर्मिनेट कर रहे हैं लाइन को, वो किसके बराबर होना चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन के कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बराबर होने चाहिए. अगर ट्रांसमिशन लाइन के कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बराबर है लोड इंपीडेंस, देन देयर इज अ नो रिफ्लेक्शन ऑन द लाइन. ओके, और ये Z नॉट की वैल्यू में ट्रांसमिशन लाइन की डेटा सीट से मिल जाती है. तो जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन का यूज करके जनरेटर से लोड तक एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, देन वी मस्ट हैव टू terminate the line with impedance that is equal to characteristics impedance. and ऐसा करेंगे तो हमें रिफ्लेक्शन लाइन पे नहीं मिलेगा, there is a no reflection, and this is basically ideal situation. We want this situation, we always want this situation for maximum power transfer from generator to load. ओके, तो आज हमने एक नए पैरामीटर के बारे में डिस्कस किया जिसका नाम है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, एंड वी आल्सो डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस एंड लोड इंपीडेंस, एंड वी कम टू नो दैट हाउ दिस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज रिलेटेड टू load impedance and characteristic impedance. And we also concluded that if we terminate the line with the impedance is equal to characteristic impedance, then we do not have any reflection on the line. Okay, we have only forward wave on the transmission line. So let's stop here. I hope कि आज हमने जो भी डिस्कशन किया वो आपको समझ में आ गया होगा. Let's stop here. We will discuss other aspect of this transmission line in our next video lecture. Thank you very much.